Assalamu alaikum. This is Dr. Syed Sajjad Hussain Rizvi. This lecture is about the basic introduction of computer architecture and organization. Primarily, they are the two different entities. Computer architecture is one entity and computer organization is another entity, and they are interrelated. So in this lecture, we would look into what actually is the computer architecture and what actually is the computer organization. In the subsequent part of this lecture, we would look into the rationale of this particular course, specifically for computer software developers, software designers, computer engineers, how this knowledge would facilitate them for writing a code, for designing a system. Starting with computer architecture. Architecture, by definition, computer architecture is a set of those attributes which are visible to the programmer. This includes, but obviously not limited to, instruction set, number of bits used for data and addresses, addressing techniques used to access a data from either from the memory devices or from the I/O devices, and so on. Analogically, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे देखते हैं कि सपोज यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन एंड डेवलप अ फायर फाइटिंग सिस्टम फॉर अ बिल्डिंग. आपसे कहा जाता है कि एक बिल्डिंग के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम डिज़ाइन करें और उसको डिप्लॉय करें. द फर्स्ट वेरी इसेंशियल activity would be to survey that building. What actually is the rationale to survey that building is to get familiarity with the architecture of a building. Like rooms कितने हैं, फ्लोर क्या है, प्लान क्या है, रूफ कहाँ है, वॉल्स कहाँ हैं, पिलर्स कहाँ पे हैं, स्टेयर्स कहाँ पे हैं, एग्जिट क्या है, एंट्रेंस क्या है. ये तमाम वो एट्रीब्यूट्स हैं दैट मस्ट बी विजिबल for the designer in order to design a system. It is very obvious, like अगर हम इन attributes से familiar नहीं हैं and we are totally blind about the attributes, we would not be able to design an effective system or the efficient system. So indeed it is a pressing need to get familiarity with the architecture of that building. The similar case is with the computer programmers. A computer programmer is supposed to write the code not only for the PC but for the mobile devices, but for the embedded systems. For example, if you are supposed to write a code for a Arduino, which is actually an embedded system, definitely commands would be different. आप जो command send कर रहे हैं वो कौन सी पोर्ट पे जाएगी, किस तरह से एग्जीक्यूट होगी, syntax क्या होगा, उसका format क्या होगा, it depends on the Arduino that you are using. And similar is case with the Raspberry Pi and the FPGA. So it is very obvious, like if you are writing a code specifically for any embedded system, you must be aware with the architecture of that embedded system. Mobile device is also a sort of a embedded system. आप में से वो लोग जो कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस रखते हैं, इनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि वंस यू आर राइटिंग अ कोड फॉर मेकिंग अ वेबसाइट दैट इज सपोज टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ पीसी, द कमांड वुड बी डिफरेंट, द टैग्स वुड बी डिफरेंट, द स्टाइल, द फैशन ऑफ अ कोड वुड बी डिफरेंट. फॉर एग्जांपल, एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म जो आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ रिएक्ट नेटिव. इट्स अ क्रॉस प्लेटफॉर्म फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS devices. Since we are using JavaScript for React Native, but the commands, the tags of a JavaScript are totally different for mobile application development rather than as compared to the mobile as compared to the website. For example, इसको हम और इस तरह देखते हैं कि आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से जिन लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, जब भी वो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कोई कोड लिखते हैं, उस कोड को वो पीसी पे रन नहीं करते. या तो वो अपने पीसी के अंदर एक वर्चुअल एमुलेटर बनाते हैं लाइक जेनी मोशन और एनी अदर एमुलेटर, या वो हॉट रीलोडिंग के थ्रू अपनी फिज़िकल मोबाइल डिवाइस के ऊपर उस कोड को रन करके देख रहे होते हैं. क्यों? उसकी वजह ये कि जो एप्लीकेशन आप बना रहे हैं वो एप्लीकेशन एक्चुअली आपके पीसी पे रन नहीं होनी, वो रन तो मोबाइल डिवाइस पे ही होनी है, और मोबाइल डिवाइस का आर्किटेक्चर डिफरेंट है.
तो इसीलिए जब आप कोड लिखते हैं और उस कोड को एग्जीक्यूट करके देखना चाह रहे हैं तो फिर आप या तो एक वर्चुअल इमुलेटर जो कि एक वर्चुअल मशीन होती है, या फिर आप फिज़िकल अपनी मोबाइल डिवाइस के ऊपर उस कोड को रन करके देखते हैं. तो दिस इज़ समथिंग अबाउट द आर्किटेक्चर. And indeed, it is very important for a computer programmer or computer software designer, software developers, engineer to get familiarity with the computer architecture. Subsequent to the architecture, the next thing is organization. Organization is how the attributes or the features are implemented in a system. Like for example, memory interfacing, addressing technique, signaling method. These are actually, it defines how attributes are implemented. Analogically इसको देखते हैं, how rooms, stairs, doors, windows are implemented into the building. यानी इसको क्यूमुलेटिवली अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि एक बिल्डिंग के आर्किटेक्चर के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं. उस बिल्डिंग के अंदर रूम होंगे, उसमें स्टेयर्स होंगी, एक फ्लोर प्लान होगा, एंट्रेंस होगी, एग्जिट होगी. ये एट्रीब्यूट्स बहुत सारी बिल्डिंग्स में हो सकते हैं, लेकिन इन एट्रीब्यूट्स की इम्प्लीमेंटेशन फ्लोर प्लान के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है. यानी हम ये कह सकते हैं कि दो सिस्टम्स के एट्रीब्यूट एक हो सकते हैं बट इनकी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होगी. बिल्कुल ऐसे ही है कि दो बिल्डिंग्स के एट्रीब्यूट्स एक जैसे हो सकते हैं कि उनमें रूम्स, स्टेयर्स, डोर, विंडोज़ ये सब कॉमन होंगे, लेकिन उनका डिज़ाइन, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, रूम्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, फ्लोर प्लान क्या है, स्टेयर्स कहाँ से जा रही हैं, ये डिफरेंट होगा. तो अगर हम इसको क्यूमुलेटिवली देखें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज़ अबाउट द एट्रीब्यूट्स, द विजिबिलिटी ऑफ एट्रीब्यूट टू द प्रोग्रामर, एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज़ अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स. सो जैसे कि हमने बात की कि किसी भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए it is very essential to be aware with the architecture and organization both for designing a system, for developing a system. This lecture is about the orientation of the architecture. We call it open architecture, or it could be a closed architecture. What actually we mean by the open architecture and the closed architecture? By definition, a computer is hardware that allows other vendor other than the original vendor to develop a software or peripheral devices for these computer systems. यानी हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक वेंडर जिसने एक कंप्यूटर सिस्टम बनाया और वो अलाउ करता है कि बाकी वेंडर्स भी उसके साथ उसके लिए या तो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें, या उसके साथ कोई पेरिफेरल डिवाइसेस ऐड करें, या वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट का एक्सेस ले सकें. तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कि दिस इज़ आ ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम. सॉफ्टवेयर में भी हम देखते हैं कि ओपन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्लोज प्लेटफॉर्म. फॉर एग्जांपल हम गूगल को कहते हैं कि गूगल इज़ अ ओपन प्लेटफॉर्म सिस्टम. वी हैव द एक्सेस ऑफ द गूगल लाइब्रेरीज और इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम्स को एक्सेस कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट के लिए हम कहते हैं कि जी वो एक क्लोज प्लेटफॉर्म है. सो सिमिलर थिंग इज़ विद द आर्किटेक्चर. देयर आर फ्यू सिस्टम्स विच आर not designed proprietary, they are not specific to one vendor, we call them the open architecture. Obviously there are few advantages and disadvantages of the open architecture जो अभी हम आगे पढ़ेंगे. Second is about the closed architecture. It is also called as the proprietary system. It is a closed architecture are the systems for which the access to the vital software or hardware configuration and interfacing is either restricted और लिमिटेड. यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक वेंडर अपना आर्किटेक्चर बनाता है, उस क्लोज आर्किटेक्चर का मतलब है कि या तो उसकी वाइटल पार्ट, उसके क्रिटिकल पार्ट तक हार्डवेयर या उसके सॉफ्टवेयर पार्ट तक एक डेवलपर अदर देन दैट वेंडर, उस डेवलपर का या तो एक्सेस नहीं होगा या वो एक्सेस लिमिटेड होगा. सो सच टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर कॉल्ड क्लोज आर्किटेक्चर. Obviously similar to the open architecture, it also has some pros and cons. अभी हम आगे देखेंगे कि वो क्या pros and cons हैं. For example, Intel की जितनी भी x86 families हैं, they share the same architecture. This provide the code compatibility, at least जो backward compatibility है वो ज़रूर मिलती है. इसी तरह की IBM 370 family series shares the same basic architecture. So
Cumulatively अगर हम कहें तो a computer system could be an open architecture or it could be a closed architecture. इसको अगर हम एक पैरामेट्रिकली इसको कंपेयर करें कि फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ पैरामीटर्स लेते हैं जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, सिक्योरिटी है, इंटरफेसिंग है, रोबस्टनेस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी का स्कोप है, परफॉर्मेंस है, इसको अगर हम कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू ओपन एंड क्लोज आर्किटेक्चर. सो ओपन आर्किटेक्चर आर वेरी फ्लेक्सिबल, लाइक you can interface different hardware, you can access the vital part of the system for configuration as well. However, on the other hand, closed architecture are very least flexible. Since closed architecture has the limited flexibility, so their security is much higher as compared to the open architecture. यहाँ पे जो हम word high और low का इस्तेमाल कर रहे हैं ये relative है, like this is low in relation to this one. Similarly, interfacing access is much higher in open architecture and interfacing is either restricted in the closed architecture or either limited. Since the open architecture interfacing is high, it's not limited, so the system would be not that much robust as compared to the closed architecture. दोबारा मैं यहाँ पे बनाऊँ, यहाँ low और high का मतलब ये relative term है कि ओपन, इसका मतलब ये नहीं है कि ओपन सिस्टम की रोबस्टनेस बहुत कम होती है इन रिलेशन टू दिस क्लोज आर्किटेक्चर. Similarly, since we have the open architecture, it invites the researchers and developers to develop new products, new platform for the open architecture. However, for the closed architecture, it is either limited to that vendor or to some specific parties. Performance is relatively medium, however the performance of the closed architecture is found to be much higher. So these are some of the relative pros and cons of the open architecture and the closed architecture.